Hello everyone, hope all of you are doing well. In the previous video, we have seen the theory of mole and the important things that are required for solving the numericals. In this video, we are going to discuss the numericals and it's a part of physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स ही इम्पोर्टेंट है और देखो कि न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है. So what is the easiest way to solve a numericals? तो तीन चीज को फॉलो करो अच्छे से, देखोगे कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सेकेंड थिंग, व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन राइट द गिवन डाटा. आफ्टर दैट राइट द फॉर्मूला that is required to solve the numerical. Then उसके बाद देखोगे क्या ना, यूनिट. दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग. यूनिट मतलब कौन सा यूनिट में दिया हुआ है एंड इन विच यूनिट वी हैव टू फाइंड द आंसर. ये एक चीज ध्यान में रखोगे. और क्या ना, व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑलवेज यू हैव टू राइट द यूनिट विद इट, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी द करेक्ट वन. तो यू विल फॉलो दिस थ्री थिंग्स. तो देखोगे क्या होगा, अगर ये तीन चीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो देखोगे कोई भी न्यूमेरिकल्स आ रहा है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. अब लेट्स कम टू दिस मोल. तो मोल को क्या किया हूं मैं ना, मोल का जो भी कैलकुलेशन है मैं इसको तीन हिस्सों में बांटा, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. तो वन बाय वन लेट डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ. So in type 1 basically we will be seeing if mass is given. Question में mass दिया होगा and you have to calculate the mass. So what is the formula we required? Now n will be equal to given mass by molar mass. So that is n is represented, what this n is representing, n is mole. So given mass is W and divided by this molar mass. Now तुम लोग बोलोगे सर मोलर मास है क्या. Now molar mass is nothing but the mass of 1 mole of any substance. कोई भी substances दिया होगा उसका mass जो भी होगा that will be that 1 mole of that substances will be called as molar mass. So question करते हैं, धीरे धीरे देखोगे it will be clear to you. So see over here, read the question. What is given in the first question? Now find the number of moles. You have to calculate the moles. Then what is given in the question? Now 12 gram of hydrogen. So what is this 12 gram represent? 12 gram is nothing but the given weight W. और क्या चाहिए मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास. तो मोलर मास यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस दिया हुआ है, हाइड्रोजन. So what will be the molar mass of hydrogen? How many hydrogens are there? 2. So 2 into एक एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1. So it will be equal to 2. हो गया गिवन डाटा. Then what we have to do? We have to write the formula. So n will be equal to W by m. So this is the formula. This is the formula we required to solve this question. उसके बाद क्या करूँगा ना, put the given. So W is given 12 divided by 2. Solve this one, you will be getting the answer as 6. Very easy. Next, क्या दिया हुआ है, 4 gram of helium. So what 4 gram represent W और इसका मोलर मास, हीलियम का मोलर मास क्या होगा, that is equal to 4. फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, let's write it directly. So n will be equal to given weight, that is 4 divided by 4. So your answer will be 1. Moving to the next question. What is given over here? 180 gram of urea. So 180 gram है क्या, तुम लोग अब बोल सकते हो this is nothing but W, given weight. Urea is given over. We don't know the formula of urea. तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करूँ, तो पहले इसका फॉर्मूला चाहिए. So what will be the formula of this urea? NH2C double bond O in this side NH2. तो इसका सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CN2
H4O। तो इसका मोलर मास क्या होगा? फॉर कार्बन इट इज 12, नाइट्रोजन इट इज 14 into 2। हाइड्रोजन के अभी देखा, हाउ मेनी आर देयर? 4 into 1 plus 16। तो सॉल्विंग दिस one, 12, 28, 4 and you will be getting this as 60. So we have got, this is what? This is nothing but the value of n. So अब देखते हैं इसको, n will be equal to 180 divided by 60. It will be equal to 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? 1.6 kg, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? kg, तो इसको ध्यान में रखना है। सो W क्या होगा? We have to convert this thing in gram. So 1.6 into 10 to the power 3 ग्राम में हो गया कन्वर्ट। अब क्या चाहिए? मोलर मास। मोलर मास ऑफ किसका? ना SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सो M will be equal to, for sulfur it is 32 and for oxygen it is 16 into 2, that is 32. It will be equal to 64. So mole N will be equal to even weight 1.6 into 10 to the power 3 divided by 64. So solve this one, you will be getting 60 by 4. So you will be getting the answer as 5. Hope this thing is clear to everyone. Now moving to the next question. क्या करना है यहाँ पे? फाइंड द मास, मोल गिवन। तो टाइप 1 का ही नेक्स्ट वर्जन। सो n will be, we have seen n will be equal to W by m. अब यहाँ पे क्या है? मास मीन्स दिस W we have to calculate, W को कैलकुलेट करना। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में हम लोग करते हैं, W will be equal to mole into molar mass. Use this formula for this question. So यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 मोल, that is n, यहाँ पे क्या है? n is 3. n is 3. What is the molar mass? For nitrogen 14 plus 3 into 1, it will be equal to 17. So what we will write over here? W will be equal to 4 into 17. So what will be the answer? It will be equal to 68 ग्राम। सो ग्राम जैसे बोला था, जब कोई भी वैल्यू आंसर के टाइम में उसका यूनिट मेंशन होना चाहिए। 68 ग्राम विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तुम लोग आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूँ। 0.25, दिस इज n। हीलियम, व्हाट विल बी द मोलर मास? विल बी इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। W 0.25 into 4, so it will be equal to 1.00, so 1 gram will be the answer. Next देखते हैं, what is given? 20 mole of O3 in kg. So this 20 is nothing but the mole O3. So for O it will be 16 into 3, it will be equal to 48. So W will be equal to 20 into 48 gram. So the answer will be 960. Now this is 960 gram. You have to convert this thing in kg. So this into 10 to the power minus 3. This has get converted into the gram. This will be the final answer. Now let's move to the next one. This is millimole. So what you will be writing? 5 into 10 to the power minus 3. Okay, this is what? This is the mole. Next, what we will see? CO2 is given. What is the molar mass of CO2? M will be equal to, for carbon 12 and for oxygen 32.
So it will be equal to 44. So what will be the answer? W will be equal to 5 into 10 to the power minus 3 into 44. So solving this one, we will be getting the answer as 0.220. So टाइप 1 के जो बेसिक्स न्यूमेरिकल्स था वो यहाँ पे डिस्कस हो चुका है. आफ्टर दिस थिंग व्हाट यू विल डू, you will open the NCERT book or your any book is there, any coaching materials is there, go through that one, try to solve this type of question by yourself. Hopefully you will be able to do this type of question by yourself. Okay, now let's move to the next type, that is type 2. So type 2 में क्या देखेंगे, what is given type in the type 2, number of particles is given. Question में number of particles given होगा and you have to calculate the mole. So what will be the formula? The number of moles, that is n, will be equal to number of particles denoted by capital N divided by the Avogadro number. Previous day we have calculated how we are getting this 6.022 into 10 to the power 23. So next formula is nothing but what? N will be equal to capital N by Na, that is Avogadro. So this is our second formula. So न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं, फिर देखोगे धीरे धीरे क्लियर हो जाए जो भी डाउट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल. नाउ पहले जो बोला था, व्हाट इज दिस वन, दिस इज नथिंग बट द कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो व्हाट, राइट द फॉर्मूला, एन विल बी इक्वल टू एन बाय एन. व्हाट इज एन गिवन ओवर हियर, 6.022 into 10 to the power 26 divided by 6 point Avogadro number 22 to 10 to the power 23. So solving this will get cancelled. So you will be getting the answer as 10 to the power 3. So moving to the next question, let's see this one. What is given in the question? The 3.001. What is this one? Now this is nothing but the number of particles. And so what we have to calculate, mole को calculate करना है. Simple, put the value of n over here into 10 to the power 21 divided by the Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23. So solving this one, you will be seeing 1 by 2, that is 0.5 into 10 to the power minus 2 mole will be the answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन ओवर हियर, 6.022 into 10 to the power 24 atoms of O in oxygen gas cylinder. Now see this question carefully. Over here what is given? Over here what is given? Now oxygen gas cylinder. ना जब ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में प्रेजेंट होगा तब कौन सा फॉर्म में होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ O2. So first what we have to do, over here atoms is given. So first what you have to do, you have to convert these atoms to molecule. Okay, after that we will calculate the number of moles. So कैसे करेंगे? Now we know that how many atoms? Now 2 atoms of O will be equal to 1 molecule. So now what, how many atoms are given this? So 6.022 into 10 to the power 24 atoms of O will be equal to 1 by 2 into 6.022 into 10 to the power 24 molecules you will be getting. So this is the molecules, this is the required molecules we are getting over here. So let's put it in the formula. So N will be equal to N by Na. So N is given over here, but 6.022 into 10 to the power 24 divided by 6.022 into 10 to the power 23. So solving this one, we will be getting this as